Okay, I okay, guess fine. Everything it is there in that slide. कौन कहले? कौन कहले? स्लाइड मिली गला सब आगे अछि ता भितरे आज्ञा अच्छा ओके हां सब लेखा है यूनिट 1 किंतु सेतिर सब अछि चारटा यूनिट मु तको चेंज कर नथिले तो चारटा यूनिट ता भितरे अछि हैला जेतले स्क्रॉल Okay, करिवे okay, सब आगे यूनिट पाइबे से थैंक यू ओके तो चलंतु फास्ट रे वेट अ मोमेंट पहला माने कार गुटे ठक ठक साउंड होची काइंडली म्यूट कर देबे रोसे बसे के करू जी मैडम ओए संडे तो रोसे के गोटे रोसे करछि खड़खड़ होजी बंद कर दियो हां तो बंद कर दियो पिला माने जा कहले क्लास पर अच्छा, ब्रेकफास्ट चलो। करियो रोसे करियो नहीं नहीं फैन साउंड सेटा वहां पियाज पियाज कटा होतो ना डाउट लागुच फैन साउंड पर पियाज पियाज Madam, if you mute कर साले थैंक यू Madam, if you kindly discuss Good. about the important questions. First we will discuss the important question, then we will discuss Disaster Management Act 2005. ठीक है? Sure. Thank you. Okay. Wait a moment. See. Ma'am, if it is possible, please share the important question. ना share the important question. I will discuss right now. आउ किछि share करि परिबिनी हैला जहा कहिबी ताकू पढिबे. Okay, ma'am. हैला मु जहा Okay, ma'am. पढी छि सुनंतो. Whatever may be the things already we have discussed, all the things are important. Okay, ma'am. Those are important. It is there in the syllabus. Only that we have discussed during your class, right? So still, Okay, ma'am. I will discuss some important things. Just note it down, and basing on this, you can prepare in yourself, right? So in your unit one, listen carefully. In your unit 1, you should prepare what is disaster management. What are the types of disaster management? What is disaster? What are the different types of disaster? In types of disaster, you have to explain in brief man-made disaster as well as the natural disaster, right? Natural disaster to detail पूरा सब आगे लिखिबा दरकार नहीं, detail रे लिखिबा दरकार नहीं, causes, effects, remedies दरकार नहीं. What do you mean by earthquake? What do you mean by landslide? What do you mean by avalanches? हाँ एमिति दुई लाइन टिके देखो एक्सप्लेन करी के जिबे 12 mark question. ठीक है? So এটা হলো आपनको unit 1 ର first question. Then you have to prepare yourself cyclone. What is cyclone? What are the causes of cyclone? Effects of cyclone, and what are the precaution measures, and what are the basically remedies for cyclone. जहाँ जहाँ cyclone रे पढ़ी छि सब आपको complete करियो. Then prepare करिबा earthquake, right? Earthquake again सुनंतु. Cyclone, earthquake, flood, drought, right? Landslide, volcanic eruption. ए सबुथिर causes, effects. सुनंतु. आपनको यूनिट 1 रे अछि flood, cyclone, earthquake, drought, landslide, volcanic eruption. ए सबुर जति की कहली causes, effects, prevention and recovery. ए चारटा को जिंस को सेठी कवर करिवो ऑलरेडी हम ता ऊपर पढि छी. ता ऊपर जहां पढि छी मु whatever may be the things already we have discussed during your class. Madam, last one is recovery. Madam, last one is recovery. हां आपण कोन काहे की हैला causes हैला effects कोन कला और तापा में स्टेप्स कोन ले रिकवरी केमति को causes, effects and remedies, right ma'am? remedies, yes. Okay. हैला ए सबुरो एतिकी मन रखि हैला. Apart from these, you should remember you have to prepare the heat wave and cold wave. 5 mark question, 5 mark question. What do you mean by heat wave? What do you mean by cold wave? What is the causes of heat wave, causes and effects of heat wave and cold wave? Thank you. Choto 5 mark question. हैला. Apart from these, you have to prepare global warming. What is the causes of global warming? What are the effects of global warming? And in the global warming,
you have to remember, you have to prepare the greenhouse effect in a separate chapter, right? Global warming causes, effects. What do you mean by Kyoto Protocol? Adopted by the international committee. And apart from this, you have to remember, you have to prepare the greenhouse effect. What is the causes of greenhouse effect and what is the effects of greenhouse effect? Global warming कौन कहीं की होची causes तार कौन effects कौन होची greenhouse कहीं होची that is leads to global warming due to the greenhouse effect. And what do you mean by greenhouse effect? What is the causes of greenhouse effect? Sir, separate one रखिए है that छोड़ा what do you mean by Kyoto Protocol adopted by international organization ताको पूरा चैप्टर ताको पूरा भल्लो भाबरे मन रखिबे मैम ग्रीनहाउस आउटर कहिए greenhouse. What are the causes of greenhouse effect? What is the effects of greenhouse effect? Causes काहे की होची आउ तार इफेक्ट कोन पड़ुची ग्रीनहाउस पे हैला causes हैला मु पांचटा सिटी कहितली फैक्टर मैम एटा अलगा क्वेश्चन आसीबो ग्रीन हाउस एटा हां ग्रीनहाउस इफेक्ट पूरा अलगा सेपरेट क्वेश्चन तक मन रखिबे ग्लोबल वार्मिंग भितरे मन रखिबे सुनंतु ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन आसला माने आपण लिखिबे कॉजेस लिखिबे इफेक्ट्स लिखिबे ग्रीनहाउस इफेक्ट लिखिबे क्योटो प्रोटोकॉल लिखिबे सब लिखिबे ता छरे सेपरेटली भलो से म पढिथिबे ग्रीनहाउस इफेक्ट ठीक अछि ना बुझि गेले यस ना Okay, okay, ma'am. यस मैम हां नेक्स्ट एला आपण करो हां कोंतु मैम ग्लोबल वार्मिंग रे टिके कोन ना औथरे कोन लिखियार अछि ता causes effects and what are the remedies पाई कोइ की गोटे हमर आसी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल अडॉप्ट करा जाय छै हैला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गोटे क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट करा जाय छै ऑलरेडी हमें पढि छै ता छडा ग्रीन हाउस इफेक्ट को भलसे पढते ओके मैम थैंक यू हां देन चलंतु सेकंड यूनिट रे मैन मेड डिजास्टर रे तीनटा मन रखिबे न्यूक्लियर डिजास्टर केमिकल डिजास्टर एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर two case already we have discussed yesterday सबुथिरो दुईटा केस डिस्कशन करिचे से दुईटा केस को जदि आपण आउ एक्सटेंड करिबा चाहते मैडम काइंडली रिपीट प्लीज मैन मेड डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर इट इंक्लूडिंग केमिकल डिजास्टर न्यूक्लियर डिजास्टर एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर सुनो तो मैन मेड डिजास्टर रे टाइप रे हमें बहुत पड़चे मैन मेड डिजास्टर रे हमरो सब किछि जाउची हैला फॉरेस्ट फायर गला बिल्डिंग फायर गला बहुत सारा जाउची ता भितरे आपण ए तीनटा को भलो से पढबे मैन मेड डिजास्टर इट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर डिजास्टर केमिकल डिजास्टर एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर हैला सेइथरे काली हम डिस्कशन करिथिले कोन ना दुईटा केस each disaster having two case already we have discussed yesterday right 2 case related to chemical disaster 2 case related to man made nuclear disaster and 2 things related to biological disaster ताको आउ जदि आपण एक्सटेंड करबा को चाहउचंती if you want to extend more things then you can go through the google as everything it is there ताको आउ जदि से सेम केस को आपण आउरी बहुत लिखिबा को चाहउचंती देन आपण google को विजिट करिकि ताको कलेक्ट कर परबे इंफॉर्मेशन हैला ताको गोटे क्वेश्चन आसीओ मैम मैन मेड डिजास्टर गोटे 12 मार्क क्वेश्चन ओके हैला तापरे चलंतु तापरे जिबे आपण कर मैडम सॉरी मैन मेड डिजास्टर रे जो तीन टॉपिक आपने इंक्लूड की केमिकल न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एक टॉपिक का ऊपर गोटे क्वेश्चन ना अलग-अलग तीन को मिला के हो सकता है नहीं एक क्वेश्चन आएगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन why the what are the things related to man made disaster and discuss the different types of man made disaster right okay तो आपको ये तीनों हाँ you have to explain this three facts sure ठीक okay then चलिए आपका हो गया नेक्स्ट हो गया pollution right pollution what is the reason of what is pollution what are the different types of industrial pollution see dear students सुनंतु ध्यान रे सुन आपनकर जदि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन पका गला सो सेठी जमा कंफ्यूज हेबे जेमिति कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एठी आपनकर मु चारटा पोल्यूशन पढैछि एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन तो एटा कोन हबो कंबाइन करिके पकै केमति what do you mean by pollution and what are the different types of pollution briefly explain the causes effects and remedies for pollution हैला एटा हला गोटे टाइप रो क्वेश्चन
जेमिति कि टाइप्स आसीगला माने आपण चारटा आगो पोल्यूशन को लिखिबे चारटा आगो पोल्यूशन लिखिबा परे सेठी व्हाट इज द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन चारटा आगो कॉजेस इफेक्ट्स पारमार्क क्वेश्चन इफेक्ट्स तार कोन रेमेडी कोन हमें हाउ टू क्लीन द पोल्यूशन हमें केमति क्लियर कर पोल्यूशन इफ इट इज रिलेटेड टू एयर इफ इट रिलेटेड टू वाटर नॉइज और इट मे बी द सॉइल हैला तो ताको केमति कर if the question will come same yeru separate question माने अलग टाइप रो क्वेश्चन आसीबो जेमति कि what do you mean by pollution what are the different types of industrial pollution in the आपन को सिलेबस रे देछि industrial pollution आसिला माने आपन कोन करिवे industrial pollution it including चारिटा 4 factor industrial pollution means it including 4 things इंडस्ट्री को कौन पोल्यूशन होची एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन चारटा को इंडस्ट्री को बिलोंग करची तो सेति पई इट मे बी द टाइप्स और इट मे बी द इंडस्ट्री जहां भी आसला आपण चारटा को सेठी कॉजेस इफेक्ट्स एंड रेमेडी सेठी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मैम तो कहि नथले नो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मींस बिलोंग्स टू दिस 4 कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन ताको माने रखिबे ता छोडा Ma'am, sorry to interrupt. Air, soil, water. What is the fourth one? Air, water, soil, and Noise. noise. Okay, thank you. हैला ताकू इंडस्ट्रियल रिलेटेड आसो के टाइप आसो स्टूडेंट्स ताकू दुईटा आगो समान चारटा आगो बिलोंग करूची ता छोडा आपण रखिबे सेठी मन रखिबे 5 मार्क क्वेश्चन रे बिल्डिंग फायर ता लिखिबे मन रखिबे 5 मार्क क्वेश्चन रे हैला एंड रोड एक्सीडेंट ताको मन रखिबे 5 मार्क क्वेश्चन रे 5 मार्क क्वेश्चन रे फायर और एक्सीडेंट आको मन रखिबे फायर ऑलरेडी हमें पढिचे काली कोल फायर टिके एक्सप्लेन करिबे बिल्डिंग फायर काहे की हुए व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिल्डिंग फायर व्हाट आर द रेमेडीज हमें काल पढितिले बिल्डिंग फायर काहे की कोल फायर काहे की ये 5 मार्क क्वेश्चन जस्ट ब्रीफली ताको नोट करिवे एंड एक्सीडेंट काहे की हां मैम सॉरी जो मैन मेड डिजास्टर रे जो कहितले सेटा व्हाट आर थिंग्स रिलेटेड टू मैन मेड डिजास्टर आ तापरटा कोन थिला मैम तापरटा कोन थिला रे पिला माने Ma'am, what is pollution? What are the different types of industrial pollution? Pollution, ma'am. तापरे पोल्यूशन थे ठीक अछि हला हां भाई मझरे टिके रखनी लास्ट क्लास एटा मैम कर यूनिट 4 भी बाकी अछि तैया आउ मु 10 मिनिट थिबो चार दे कारण एग्जाम अछि पिला माने हला तो तापरे कोन हला ए सब सला मैम अपन अपन क्वेश्चन पूरा टिके नले पठै देबे कि ग्रुप रे आउ मु पठै परिबे नि आपण सुनि दे कि नोट कर दे ताले आज्ञा आज्ञा अपन ताले कहि देना मैं डाकिबे लिखि दोछ मैम से लेखुची कहूची पास एथि पय हला मैडम ओनली रोड एक्सीडेंट और एक्सीडेंट ना ट्रेन एक्सीडेंट आल्सो सुनतु रोड एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट आपण को सब समान हला एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेश्चन आला माने टिके रोड रो टिके ट्रेन रो टिके ये रो दुई लाइन कवर करिए 5 मार्क रो क्वेश्चन सेडी एक्सीडेंट रे खाली आपण रोड लिखिले भी हबो ओके मैडम खाली रोड को लिखिबे व्हाट इज द कॉजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट पूरा एनफ मोर देन एनफ ठीक अछि ना फायर आसला माने आपण खाली बिल्डिंग फायर लिखिले भी हबो तीनटा देछि ता भितर बिल्डिंग फायर खाली बिल्डिंग फायर लिखिले भी हबो काई व्हाट इज द कॉजेस ऑफ बिल्डिंग फायर व्हाट इज द रेमेडीज ऑफ बिल्डिंग फायर देई पारे 5 मार्क रो क्वेश्चन 5 मार्क रो केते लिखिबे हला यागो लॉन्ग आसीबो चलंतु थर्ड यूनिट को चलंतु थर्ड यूनिट रे आपनकर कोन पढिबे थर्ड यूनिट रे बहुत जिंस अछि जेमति कि आपण मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग प्रिपेयर करिवे थर्ड यूनिट रो कोन ना डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल what are the cycle what is the briefly explain the नले आसीबो क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल सेठी आपण को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एटा काली कहितली हैला साइकिल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पांचटा स्टेप दे की जाउची जेमति कि आपनकर फर्स्ट स्टार्ट करबे प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयरनेस रिस्पांस रिकवरी हैला आपको मु जेमति कहितली काली सेमति एक्सप्लेन करि जिवे एटा हला प्रथम क्वेश्चन सेकंड हला आपनकर मैडम ये बड़ा क्वेश्चन ये 12 मार्क्स क्वेश्चन और शॉर्ट नोट क्वेश्चन 8 हैला तापर चलंतु रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट 12 मार्क रो क्वेश्चन हैला एठी मु एना पढेबी रोल ऑफ आपनकर ए जो 2005 एक्टा से अनुसार आपण एक्सप्लेन भी सुंदर भाबरे सेठी भी सेटा भी आपण एक्सप्लेन कर परिबे एठी भी आपण एक्सप्लेन कर परिबे हैला
सो रोल ऑफ वेरियस एजेंसी एटा हमें आखि बंद करिगिरी लिखि परिबा और एक्सप्लेन भी करि परिबा एते समति किछि हार्ड एंड फास्ट ये नाही हैला सो द रोल ऑफ वेरियस एजेंसी ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट आको गोटे 12 मार्क क्वेश्चन मन रखिबे हैला थर्ड आसिला आपनकर जोटा एना पढेबी राइट नाउ एटा हला आपनकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 2005 जोटा कि लेजिस्लेशन आसी गला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट आसी गला इति तो एटा को गोटे मन रखिबे तो तीनटा क्वेश्चन मन रखिबे गोटे ला साइकिल आ गोटे ला आपनको 2005 एक्ट हैला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 and you have to remember the role of different authorities agencies in disaster management तीनटा आगो 12 मार्क रो क्वेश्चन हैला आ छडा आपनकर एटा को मन रखिबे 8 मार्क कोटा आपनकर डिजास्टर मेडिसिन कोन एटा अछि आपनकर 4th यूनिट आपनकर अछि डिजास्टर मेडिसिन कोन हैला से डिजास्टर मेडिसिन भितरे आपनकर सब आगो स्टेप कवर करछि एठी जेमति कि रेस्पॉन्स रिहैबिलिटेशन रिकवरी ए सब आगा भितरे कवर करछि तो डिजास्टर मेडिसिन व्हाट इज द डिजास्टर मेडिसिन कल हम पढिथिले मो सुंदर भाबरे आपनको पढैछि डिजास्टर मेडिसिन ए साइकिल ला मन रखि देबे डिजास्टर मेडिसिन कोन तापर डिजास्टर मेडिसिन को हमें केमिति लोकन को सर्वाइव प्रोवाइड करछे जेमति कि प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रेस्पॉन्स और रिकवरी स्टेज रे एंड लास्ट देला आपनकर एमटी करिके आपन कोन ना मिटिगेशन फॉर रिस्क रिडक्शन ए सब करके आपनको एक्सप्लेन करिवे हैला काली मो पढैतिली ठीक ना पिला माने ए गोटे क्वेश्चन 14 मिनिट रे मन रखिबे 8 मार्क रो क्वेश्चन ठीक ना क्लियर ना हां द थर्ड यूनिट मोर एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन रे पढैतिला मैं थर्ड यूनिट रो क्वेश्चन ता टिकिया तो रिपीट कर दे सेकंड दीटा खाली साइकिल सेकंड दीटा डिजास्टर कह दियो बाबू 2005 हां वेरी गुड the disaster medicine role of various agencies of disaster management अरे जणे कुहो यार जणे तो कहूची यार चुप रहो थर्ड फर्स्ट है साइकिल सेकंड है various agencies in disaster management हां थर्ड है disaster management act 2005 जोटा मैडम है ना पढैबे फोर्थ है disaster medicine सेटा 14 यूनिट सेटा 14 सेटा होची फोर्थ यूनिट रे सेटा होची 14 यूनिट रे हैला ठीक ना हां ओके मैम ठीक है एतिको सबो जम्मा भूलिबेनी 14टा क्वेश्चन आ भितरो ऑलरेडी आपण माने पाइ जेचंती असाइनमेंट क्वेश्चन को सुंदर भाबे लिखिथिबे काइंडली म कहि दोची असाइनमेंट क्वेश्चन सुंदर भाबे दुईटा आउट ऑफ 5 आपनकर एनी टू असाइनमेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर देथिबे सुंदर भाबे तक लिखि देथिबे पूरा खाचरू माचरू कर लिखिबेन टिके सुंदर भाबे रिप्रेजेंट करथिबे आ आपनकर एइथरु जेत्ती की कहली आपनकर जेत्ती की इंपोर्टेंट सेत्ती म कवर करची हां तो से अनुसार आपण सुंदर भाबे प्रिपेयर करथिबे चलो तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कोन सुन फर्स्ट अपन स्ट्रक्चर टा देखिबे ए अनुसार म एक्सप्लेन करी हैला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यूनिट 3 रो क्वेश्चन सॉरी गला 4 5 परे माने क्लास करे देबे हेले पिला माने 4 रो दे हला परा यूनिट 4 डिजास्टर मेडिसिन अच्छा सॉरी दिस मेडिसिन we have only 4 units केवल रहला इंपोर्टेंट चारटा यूनिट हैला चारटा यूनिट आपनकर पांचटा यूनिट नाही चारटा यूनिट अछि चारटा यूनिट रे खाली 14 यूनिट रे डिजास्टर मेडिसिन अंडर रे आपनकर रिकवरी रेस्पॉन्स रिहैबिलिटेशन सब आगा ता भीतर कवर करछि हैला आज पर योर सिलेबस तो जिबा एना नेक्स्ट जिबा पिला माने हां केस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ध्यान रे सुनिबे भल्ला रे लिखि मने रखिबे 2005 see this disaster management act 2005 initiated and the step taken by the government of India at the year of 1999 2005 रे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आसीबा पूर्वरु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू 1999 रे तारो इनिशिएशन नैथिला जेमति कि at the year of 1999 high power committee on disaster management developed by government of india high power committee gote disaster management ପାଇଁ develop करथिला 1999 रे right जो थिरे कि it identified that high power committee at the year of 1999 adopted by the government of india it identified 31 disaster 31 डिजास्टर को माने आइडेंटिफाई करथिले लिस्ट टू मैन मेड डिजास्टर एज वेल एज द नेचुरल डिजास्टर जोटा कि मैन मेड और नेचुरल दुईटा को कवर करथिला
this 31 disaster categorized ए 31 disaster को जो हमें ऑलरेडी पढ़िचे टाइप्स ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल रे जते सब पढ़िचे ताकू पांचटा रे माने किछटा ग्रुप रे कन्वर्ट करतले 31 disaster categorized in different group रे माने ताकू कैटेगराइज करतिले which are जेमति कि हमें कहिबा one is climate related climate को गोटे कंडीशन रे रखितिले जेमति कि हमें कहिबा जियोलॉजिकल apart from this chemical nuclear biological एमिति करिके समाने डिफरेंट कैटेगरी को कोन ग्रुप रे डेवलप करथिले डिजाइन करा जायतिला केबे at the year of 1999 31 man-made and natural disaster identified by the government of India and it categorized in a different group ठीक है apart from this then after तापरे कोन हैला ना at the year of 2001 national committee appointed by the government of India गोटे national committee appoint कला 2001 रे काहे कि ना in 2001 गोटे हमरो biggest disaster हेतिला हम इंडिया रे जोटा कि द गुजरात अर्थक्वेक 26 जनवरी सकाळू 26 जनवरी ना 26 जनवरी 26 जनवरी दिन सकाळू जोटा कि पिला माने सब स्कूल रे सब पैरेंट ए सब करचोंती से टाइम रे अर्थक्वेक हेतिला गुजरात रे जोथरे कि बहुत एक्चुअली चाइल्ड मानकर डेथ हे जायतिला राइट तो डियर स्टूडेंट्स तो सेहिति पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2001 रे नेशनल कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द गुजरात अर्थक्वेक द बेसिकली द हमर जोटा कि बहुत ग्रेट जोटा कि बहुत माने कोन डिजास्टर काइंड ऑफ माने गोटे बहुत बड़ अर्थक्वेक हमर इंडिया रो हेतिला देन आफ्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट this committee adopted by government of India at the year of 2003 रे National Institute of Disaster Management गोटे concept committee adopt कला हमरो government of India 2003 रे ए सबु को कवर करिकी at the year of 2005 Disaster Management Act formed by the Indian Constitution the legislation Indian Constitution and legislation formed and developed the Disaster Management Act 2005 तो हमरे सबो कमिटी मानकर डिस्कशन मानकर माने कोन कंट्रीब्यूशन रे 2005 रे हमर आसला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैला जेतले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आसला सेना एटा को देखिबे कोन जो स्ट्रक्चर ता ताको देखिबे स्ट्रक्चर ता कोन देखंतु प्रथमे आसला डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट आर द डिफरेंट हां मैम इट क्लियरली विजिबल हो क्लियरली विजिबल होनी एना विजिबल हला मु कहि दोछि सुनंतु क्लियरली विजिबल होन तो मु कहूछि सुनंतु मु कहूछि सुनि परिबे हला देखंतु फास्ट ऊपर जोटा कि आपण प्रथम कर्नर रे आसिला सेंट्रल गवर्नमेंट हला प्रथम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व्हाट हु आर द डिफरेंट पर्सन अथॉरिटीज एंड हु आर द डिफरेंट पर्सन्स आर हु आर द डिफरेंट ग्रुप्स आर इन्वॉल्वड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रथम आसला फर्स्ट आसला सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे आसला प्रथम सेंटर रहिला सेंट्रल गवर्नमेंट रो ता तळु को देखंतु आसला स्टेट गवर्नमेंट ता तळे रहिला हायरार्किकल पोजीशन हमर पूरा जेमिति हमर पूरा हमर जदी हमें कहबा द सिस्टम ऑफ द कंट्री इन आवर कंट्री द सिस्टम इट इज देयर इन अ हायरार्किकल पोजीशन the supreme authority the supreme power it is there under the central government then central government से power distribute करछि state government को तो प्रथम आसला कि central government पर आसला state government पर आसला कि ना district level रे district administrative authority under रे दुई जण आसले कि गोटे हला पंचायती राज आ गोटे हला म्युनिसिपालिटी तो डियर स्टूडेंट्स प्रथम हला सेंट्रल गवर्नमेंट देन आसला स्टेट गवर्नमेंट देन हला लोकल गवर्नमेंट एमान को लोकल गवर्नमेंट कहा जाउची काहा को लोकल गवर्नमेंट कहा जाउची ना पंचायती राज एंड म्युनिसिपालिटी इट इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इट रिलेट्स टू पंचायती राज एंड म्युनिसिपालिटी इट इज द लोकल गवर्नमेंट से माने लोकल गवर्नमेंट हमरो तीनटा रे डिवाइड हेछि गला छड दियंतु तापर एपट साइड को आसंजे एपट साइड आसले कि ना एपट साइड रो आपनकर फर्स्ट जो बड़ सर्कल ता अछि सेति रहला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जदि आज का डेट रे हमर कि रे हमर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रे स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट रे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रे प्रेजेंट डे कि अछंती अमित शाह हां वेरी गुड हैला अमित शाह
it is there in the Ministry of Home Affairs in the present day environment. Hela present situation रे सी हमरो Minister of Home Affairs अछंती तांकर अंडर रे देखंतु सब आगो इंटर रिलेटेड हेची सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे गोटे रहिला Ministry of Home Affairs ता सहित रहिला आ गोटे किए ना NDMA रहिला जोटे कि एटा NDMA दिस वन NDMA तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे दुईटा रहिला प्रथम आसला Ministry of Home Affairs and second one is the NDMA. NDMA कोन ना National Disaster Management Authority. National Disaster Management Authority NDMA. तो Ministry of Home Affairs रो जोटा कि हमर रहिले हमर चीफ आपण रहिले होम अफेयर्स हमर रहिले जे कि मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन तांको अंडर रे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द NDMA एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ए तीन जन को अंडर रे कि आसला तीन जन को अंडर रे आसला NIDM पिला माने टिके म्यूट करिवे NIDM ए तीन जन को अंडर रे देखंतु इंटर रिलेटेड अछि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज वेल एज द NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ए तीन जन को अंडर रे कि आसला दुईटा फैक्टर आसला से दुईटा फैक्टर कि ना गोटे आसला ए दीटा हैला ए दीटा फैक्टर किए आसला माने कहा अंडर आसले सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज वेल एज द NDMA ए माने तीन टांको कंट्रोल रे दुई जन आसले ए दुई जन किए ना गोटे हला NIDM आ गोटे हला NDRF NIDM कोन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट केयरफुली सुनुथिबे मु कहिला लो पछारबेनी परे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर कहार कंट्रोल रहिला सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज वेल एज द NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अंडर रे दुईटा सेल आसला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स NDRF रेस्क्यू फोर्स F for rescue force F for rescue F for fund national disaster rescue fund national disaster rescue force ता माने ए माने दुईटा को कवर कला हैला ए माने काहा को रखिचंती सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हमर होम अफेयर्स एज वेल एज द NDMA अंडर रे दुईटा रहिला दुईटा रे गोटे ला NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज द नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स NDRF एंड F for से गोटे मन रखिबे नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फंड भी ए माने बुझिबे फंड भी बुझिबे आ फोर्स भी बुझिबे ए माने हैला तापरे चलो सर मैम आर फॉर रेस्क्यू और आर फॉर रिस्पांस रेस्पॉन्स हां रेस्पॉन्स फोर्स हैला रेस्पॉन्स फोर्स आ फंड बुझिले ना नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड रेस्पॉन्स फंड F for fund F for force दीटा को F हिसाब रे मन रखिबे हैला तापरे चलंतु ए जो NDMA रहिला NDMA अंडर रे द NDMA अंडर रे रहिले किए ना द सुप्रीम एडी कहिबी यार रूल टा कहिबी किंतु ता अंडर मैडम NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी अथॉरिटी ओके अथॉरिटी तांको अंडर रे रहिले किए एटा को हेड कले मु एडी कहिबी पूरा आर रूल्स रेगुलेशन टा कहिबी आको हेड कले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया the supreme authority of NDMA prime minister of India and other 8 members prime minister को सहित आ other 8 members अछंती NDMA रे हैला ता सहित गोटे अटैच छला NDMA सहित गोटे अटैच छला नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी असला कहा अंडर रे NDMA अंडर असला नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी हैला तो NDMA रे रहिले प्राइम मिनिस्टर जोटा कि हेड ऑफ द NDMA apart from these 8 members 8 जन मेंबर रहिले ता छडा रहिले नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एपटे आसी गले का अंडर रहिला NDMA अंडर रहिला NDMA अंडर रहिला NDMA सहित एठी आसी गला स्टेट देखो तो ये आरो मार्क आगो मने रखिबे NDMA तळु को आसीला कोन SDMA कोन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ता तळे आसीला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी headed by the chief minister of India in a respective state ro chief minister माने ताकू head कले काकू SDMA को जोथिरे कि other 8 members chief minister रहिले धरंतु आम स्टेट रे नवीन पटनायक जी रहिले तांको सहित 8 जन मेंबर रहिबे जोटा कि SDMA जेमति NDMA सेमति SDMA सेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेरी 8 जन मेंबर प्राइम मिनिस्टर को सहित 8 जन मेंबर्स चीफ मिनिस्टर को सहित इन अ रिस्पेक्टिव स्टेट सब स्टेट रे हला ता तळे के रहिला ता तळे रहिला DDMA कोन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हला
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल आसला जोटा कि पंचायती राज म्युनिसिपालिटी हैला जोटा कि ऑलरेडी एठी हमें पढिचे पंचायती राज म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल आसला एडी डीडीएमए आसला डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो एडी जेंति हमर रहिला एनडीएमए अंडर नेशनल एग्जीक्यूटिव हमर रहिले कमिटी सेमती एसडीएमए अंडर रहिले मध्ये नेशनल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी हैला एसीसी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी रहिला स्टेट लेवल रे हैला सो दिस इज द ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर आको एना कोन कहूची ध्यान रे सुनिबे फर्स्ट इंट्रोडक्शन देबे तापर स्ट्रक्चर ता बनेबे तापर आसला कि प्रथमे ना प्रथम आसला एनडीएमए की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी headed by the prime minister of India as already I told you is the apex body means supreme body se rahile for disaster management act in India NDMA ro kamo kona what is the role and responsibility of NDMA रो खाली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आसीबो पिला माने तो आकु पूरा मन रखिबो आ भीतर दिटा खंडे क्वेश्चन आसीबो हैला तो NDMA रो फंक्शन और रिस्पांसिबिलिटी कोन ना NDMA रो रिस्पांसिबिलिटी हैला डेवलप पॉलिसी डेवलप करिवो ता छडा अप्रूव करिवो नेशनल प्लान जते सब नेशनल प्लान अछि ताको अप्रूव करिवो हैला अपार्ट फ्रॉम दिस अप्रूव प्लान प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेमिति की मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किछि गोटे प्लान कहिला सपोज कहिला हमरो किए ना वेलफेयर डिपार्टमेंट किछि गोटे प्लान कहिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किछि गोटे प्लान कहिला सब जो जते डिपार्टमेंट अछि समान किछि प्लान देले फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द बेटर डेवलपमेंट सो सेटा को अप्रूव करिवो ये किए एनडीएमए अप्रूव करिवो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर 8 मेंबर इट इज देयर इन द एनडीएमए सो डेवलप पॉलिसी अप्रूव नेशनल प्लान approved plan prepared by the Ministry of Department Government of India guideline for state authority मानक पई गाइडलाइन करा जिवो से माने कोन करिवे केमिति काम करिवे सब स्टेट पई गाइडलाइन माने फिक्स करिवे डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन ए सब करिवे एनडीएमए वाला रिलीज फंड फॉर मिटिगेशन फंड वो कहितली फंड रिलीज करिवे माने कहार ये रे ना हमर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सहित मिसिगिरी एमाने कोन करिवे फंड रिलीज करिवे सो एमानकर काम होला हमर जहा जहा जोडी प्रॉब्लम होची सेति के माने फंड रिलीज करिवे ता छडा प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर कंट्री धरंतु अदर कंट्री रे किछ गोटे जेमति कि हम कोरोना टाइम रे हमें मेडिसिन पठैतिले बहुत सारा कंट्री को जेमिति कि हमर एइना जो अर्थक्वेक हेतिला कोठी टर्की एंड सीरिया रे हमर एनडीआरएफ जोटा कि जाई कि हम तार गोटे ना रखा जाइतिला कोन से एनडीआरएफ जो जाइतिले रेस्क्यू करबा पई हला सेमानन को हमें सपोर्ट करथिले सो एडा की डिसीजन नबो एडा नबो सेंटर धरंतु पाकिस्तान को हमें हेल्प करबा कि को भी कंट्री को हमें हेल्प करबा ड्यूरिंग द डिजास्टर दैट डिसीजन टेकन बाय द सेंटर दैट इज द रोल फंक्शंस ऑफ एनडीएमए हला तापरे चलंतु एनडीएमए सल्ला पर हमें कोठी कि जिबा एनईसी आसिला एनईसी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जोटा कि अंडर एनडीएमए रहिला सेमान को काम कोन ना नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी हैला हैज द कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एमाने कोन करिवे कोऑर्डिनेट करिवे मॉनिटर करिवे रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट जोथिरे कि एमाने कहार काम ना एनईसी रो काम हैला एमाने कोन करिवे टू प्रिपेयर नेशनल प्लान मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी एमाने नेशनल प्लान प्रिपेयर करिवे मॉनिटर करिवे इंप्लीमेंटेशन करिवे नेशनल पॉलिसी को किए ना जोटा हला हमर एनईसी वाला हला तापरे पळे असंतु एनआईडीएम रो काम कोन एनआईडीएम नेशनल जोटा कि हमें कहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये गोटे ग्रेट रोल प्ले करे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट is a statutory body. Why it is a statutory body? Because it is there in the government of India and it is there in the Act 2005 Act. That's why it is a statutory body. Hela kahi ki na ita constitute hechi under the 2005 Act. Amaro disaster management 2005 Act. Ye hela ye ara kamo kono na ye basically the NIDM with the try to basically a leading capacity ara kamo hela na with the dedication to capacity building kahara capacity building karibo na capacity building of NDRF pro capacity building karibo and basically the key responsibility hela to create human resource create karibo
enhance capacity जोटा कि मु कहली capacity building करिवो and human resource development करिवो create human resource capacity building and human resource development ता छडा apart from this give training conduct research documentation for disaster management planning legislation policy formation and implementation ए सब काम हैला कहार NIDM रे गोटे सेपरेट क्वेश्चन 5 मार्क रो 8 मार्क रे आसो सेपरेट क्वेश्चन आ भितर अछि हैला जोटा कि आपण एटा पुराडा मन रखि देबे ताले से भितर सब आगो कवर होई जिवो सो NIDM रो की रिस्पांसिबिलिटी कोन कहली ना माने ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करिवे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करिवे कॉल आसला काटली पिला माने हैला इना सुबुथवा आई होप सो हैला सो एमान को ट्रेनिंग देबे एमान को रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी मेकिंग सब किछि करिवे एमान हैला ता छडा एमान को काम कोन द इंस्टीट्यूट वर्क विथ वैरायटी मिनिस्ट्री सहित ये काम करूची वैरायटी मिनिस्ट्री के जेमति कि हमें डिस्कशन करिथिले वैरायटी मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ हमें कहबा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जत्ते मिनिस्ट्री अछंती हैला सब मिनिस्ट्री सहित मिसी गिरी ये काम करिवो इंस्टीट्यूट वर्क विथ द वैरायटी ऑफ मिनिस्ट्री जोटा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ता छडा स्टेट गवर्नमेंट सहित मिसी के काम करिवो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट एज वेल एज द पंचायती राज एमानक सहित मिसी के काम करिवो एकेडमिक मानक सहित मिसी के काम करिवो रिसर्च सहित रिसर्चर मानक सहित मिसी के काम करिवो हला जोटा कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सहित मिसी काम करिवो दोस आर देयर इन इंडिया एंड ओवरसीज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्जेक्टिव हला ए सब नै कि काम करिवो NIDM तो डियर स्टूडेंट्स NIDM गला हमर फर्स्ट आसला कि फर्स्ट आसला हमर गोटे सेकंड पड़ी गला कानाटा हला तो फर्स्ट आसला हमर किए फर्स्ट आसला NDMA देन आसला हमर NEC देन आसला हमर NIDM देन आसला NDRF कोन नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स रो काम कोन इट इज अ स्पेशलाइज्ड फोर्स जोटा कि हमें देखि छे हला माने हाउ मच दे आर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड टुवर्ड्स his or her work no so it is a very competent and committed force it is a specialized force that developed by the government of India anku kiye karuchi sabu kama joda ki NIDM karuchi eman ko sabu hela jouthire ki disaster response eman ko kamo hela NDRF is the specialized force for disaster ko eman kon karibe response and rescue right under the supervision and control of the NDMA kahara control re mane rahibe NDMA control rahibe prime minister of India and other 8 member control re mane rahibe supervision control le tanka control le rahibe but eman ko kiye सब करिवो ना eman को करिवो NIDM National Institute of Disaster Management eman को सब जोटा कि ट्रेनिंग वगैरह किछि भी एमान को डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग सब किछि NIDM करिवो हैला तो डियर स्टूडेंट्स जहा आपनकर कहली मु नेशनल लेवल रे सेम जिंस को कॉपी पेस्ट कर देबे स्टेट लेवल रे जेमति कि आपनकर NDMA रो जहा काम होला नेशनल लेवल रे सेम काम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करिवे हैला सेम काम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करिवे हैला जहा आपनर एग्जीक्यूटिव कमिटी कले सेम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी करिवे सो ताको कोन करिवे कॉपी पेस्ट कर देबे हां मैडम व्हाट इज DMD in your slide DMD कोडे गला DMD अच्छा DMD के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अरे हां हैला मैम लाइक सेंटर एंड एमान सुनतु एमानकर पूरा काम हैला एमानकर समस्तकर काम हैला एटा समस्तकर काम एइडा को मन रखिबे साइकिल दा समस्तकर like center and state is chaired by PM and CM respectively, then who is chaired district level? Collector? District level, I told you, district level in the Panchayat Raj and municipality, that is a local government. In municipality level, the chaired by the municipality, that is a local government. It is there in a third tier. First year, it is a central government.
second tier it is a state government, third tier it is a local government. So that is controlled by the Panchayati Raj and municipality. Already I told you. And the responsibility of this 3-tier system in our government of in India. So the responsibility is, you have to remember this cycle. What they will do: prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery. It may be the state, it may be the center, it may be the local government. So all the responsibility, function, responsibility, they have to do this. ए सब को ସେମାନେ नेकी काम करिवे हैला तापरे सुनि दियंतु पिला माने जेमति कि मु कोन कहली ना आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा एठी काम कोन दीटा लाइन मन रखिबे एठी काम कोन ना काम होला इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 75% if any kind of disaster will be there, disaster related to man-made or disaster related to natural. Suppose natural disaster, Odisha re cyclone hela, natural disaster. Odisha re Coromandel Express train accident hela, that is the man-made disaster. It may be the man-made disaster, it may be the natural disaster. It is a responsibility of the central government. The central government contributes 75% towards the state. State को 75 जहाँ हमारा loss है ची जेत्ती की हमको दरकार सही चुरो 75% respective state को दबो ताहले मैडम आउ 25% किए दबो 25% respective state दबो 75% responsibility by the center 25% responsibility by the state special state जदि special state रे एमती disaster हैला that disaster related to man-made or disaster related to natural then the center have to contribute 90% 90% दबो special मैडम किए जेमति कि स्पेशल स्टेट जो कहले से माने कि स्पेशल स्टेट रिलेटेड टू वी कैन से दैट इज अ स्टेट रिलेटेड टू हिमालय region state like we can say Uttarakhand, right? Himachal Pradesh, Sikkim, these are the some state it is there in a Himalaya regions. So if some kind of disaster related to man-made or natural, then the center have to contribute 90% to this special state, right? And the center have to release fund into 2 equal contributions as per the recommendation of the finance commissioner. So मैं गोटे कहितली response force and response fund कहितली. So response fund एडी किए करिवो finance commissioner रहिले हमरो ministry of home affairs एमाने सबो मिसी की एमानकु दुईटा equal installment रे एमानकु fund release करिवे. Dear students, this is all about your 2005 act disaster management act. आपको भलो भाबरे मने रखि देबे and आपको सुंदर भाबरे explain करिवे. Clear ना? Yes ना? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. मोर टाइम हे गलानी मोर 10टा आलु को बाहरबी मोर एग्जाम अछि हैला. I hope आपण मानको आपण कर देई देछि कोन आपण कर स्लाइड देई देछि ता छडा आपण मानकर सब ma'am all the best for your exam. मोर एग्जाम नै पिलांकर एग्जाम अच्छा sorry आज एग्जाम नै कि 98000 पिला दोचंती ओडिसा रे जोथि कि आपनकर डीडीसी रे गोटे सेंटर हेछि सेटा स्टेट गवर्नमेंट रो हला and PU and J exam, right? PU हां right सही रे मु जाछि इन्विजिलेशन पाई हां कोंतु. Madam, if you kindly share your contact information, if anything required, we can contact you. If you kindly. No, I am there. No, I am working at DDC. I am working. I am there since morning 10 to 5 o'clock. If any kind of doubt, any kind of query, I am there. If you will come, then I will clarify your doubt. Ma'am, please ask Deepak sir to share this PPT. PPT Deepak sir already share कर दई चंती. Deepak already shared the PPT. Today shared. Thank you. एते सुनंतु तुम टाइम हे गलानी सुनंतु. Thank you. Okay, thank you, ma'am. आपण माने सुनंतु मु कोन कहूची आउ पूरा सिलेबस 4टा को कंप्लीट हे गला. PPT डिस्कशन PPT पठाई गला. बही पाखरे अछि, गूगल अछि, प्लस हला आपनकर क्वेश्चन अछि, सिलेबस अछि हला. तो एतिको को छरिकरी इट इज अ वेरी इजी एंड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जोटा कि डे टू डे लाइफ रे हमर पाई एटा बहुत ही एसेंशियल आ एटा होची बहुत इजी पेपर टी जोटा कि हमें मध्ये हम मनरु बहुत किछि लिखि परिबा हला. जो आपको डियर स्टूडेंट्स जोटा कि बेस्ट भाबरे आपनकर जेति कि परिश्रम करछन सेति कि बेस्ट भाबरे आउटपुट देबे. दिस इज योर इनपुट एंड यू हैव टू गिव योर आउटपुट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हला. सो आउटपुट ता सेही देकरी बेस्ट एग्जाम करिवे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन and see you the time of third semester रे देखा हला. थर्ड सेमेस्टर आपनकर. Okay, thank you so much. Bye bye. Have a good day. All the best for your examination.